नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम आशीष शर्मा है एंड टुडे वी विल सी चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6 जियोग्राफी NCERT in which we study about the globe. In these also we will know about latitude and longitude lines. First we will see the overview of this chapter. This chapter explains how Earth represented on globe, how we locate places using latitude and longitude, and also why time differs from one part of the world to another part. The intersection point of the latitude and longitude lines has defined the exact location of the place. This will also have studied here. So let's first discuss what is globe. In short, a globe is the model of the earth. The earth is spherical in shape, slightly flattened at poles and bulged at equator, means the shape is oblate spheroid. Let's see. The globe is like that, the shape of earth is like that, means bulged at the here and the flattened at the poles. This bulge is due to the gravitational force acting on moon and sun. That is why the bulge seen here. Okay. A globe is a miniature model of अर्थ, मीन्स यह एक मिनिएचर मॉडल है अर्थ का, वहाँ जहाँ पे कॉन्टिनेंट, ओशियन, कंट्रीज और इम्पोर्टेंट पैरेलल्स एंड मेरिडियंस को शो करते हैं. ठीक है, यह एक मिनिएचर मॉडल है अर्थ का, छोटा मॉडल है अर्थ का. इट हेल्प अस अंडरस्टैंड द अर्थ्स रोटेशन, हेमिस्फेयर्स, टाइम जोन्स, लोकेशंस ऑफ द प्लेसेस. यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें देख पाएंगे. ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ UPSC, अ ग्लोब रिप्रेजेंट द ट्रू शेप एंड प्रोपोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस, अनलाइक मैप्स डिस्टॉर्ट एरिया एंड डिस्टेंस एट द पोल्स. ठीक है. द सेकेंड पॉइंट वी सी द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. लेट्स सी. The latitude are imaginary lines running east-west around the globe. Each latitude is parallel to equator, so they are called parallels of latitude. They measure angular distance north-south of the equator 0 degree. These let's see from the figure. ठीक है, ये देखिए. These are the latitude lines. These are the latitude line. This red color line is known as 0 degree latitude, known as equator line. Above these latitude lines and below these latitude lines are also parallels to the equator line, means all the lines are parallel to each other. The above portion of this equator is known as northern hemisphere, and here is southern hemisphere. So that's why these lines are also called the parallels of the latitude. In example, the equator line is known as 0 degree latitude. The north pole is known as 90 degree north latitude. The south pole is known as 90 degree south latitude. Here 90 degree north pole and 90 degree south pole in south. Some important latitude we will discuss. The 0 degree equator divide earth into northern and southern hemisphere. Here see the northern hemisphere and the southern hemisphere. 23.5 degree north divides Tropic of Cancer, northern limit of tropical zone. Northern limit of the tropical zone means
if this is equator line, here we see here, this is equator line and this is the Tropic of Cancer. Tropic of Cancer means the northern limit of tropical zone. This is the tropical zone. 23.5 degrees south, Tropic of Capricorn, and it is the southern limit of tropical zone. Means this line is Tropic of Capricorn and this is the southern limit of tropical zone. This zone is also known as tropical zone. 66.5 degree north, it is a Arctic Circle boundary. This is Arctic Circle boundary and it is the limit of North Frigid Zone. And 66.5 degrees south is a Antarctic Circle boundary and this is South Frigid Zone limit. And the sixth point is 90 degree north and south. ये 90 degree north and 90 degree south is the poles and which is coldest region of the earth. Here no sunlight for a long period have been seen. Okay, यहाँ पे अधिक दिन तक ना सन दिखाई देता है और ना ही अधिक दिन तक रात दिखाई देती है. यानी लॉन्ग पीरियड ऑफ सनलाइट हैव बीन सीन इन द नॉर्थ पोल व्हेन साउथ पोल इज डिस्टेंट फ्रॉम द सन एंड द व्हेन साउथ पोल इज हैव सीन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ सन, द नॉर्थ पोल डज नॉट हैव अ light zone. Okay, the third point is heat zones of the earth based on sunlight received. The first is torrid zone. Torrid zone means ये रहा आपका टॉरिड जोन फिगर के माध्यम से, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इन दोनों के बीच में ट्रॉपिकल रीजन है और वो रीजन सबसे हॉटेस्ट रीजन है टॉरिड, उसे टॉरिड जोन बोलते हैं. हॉटेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से सन का मूवमेंट इधर से इधर होता है. ठीक है, जिसकी वजह से सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पे पड़ती है और इसीलिए ये हॉटेस्ट रीजन है. ठीक, टॉरिड रीजन क्या है? बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट सनलाइट, देयरफॉर इट इज़ नोन एज हॉटेस्ट जोन ऑन द earth. Second is temperate zone between tropics of Arctic Antarctic Circle where moderate climate found. ठीक है, ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये रहा ट्रॉपिक ऑफ अंटार्कटिक सर्कल. ये अंटार्कटिक सर्कल है. ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये रहा आर्कटिक सर्कल. इन दोनों के बीच में टेम्परेट जोन पाया जाता है. इन दोनों के बीच में टेम्परेट जोन पाया जाता है और यहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट देखा जाता है. ठीक है, द थर्ड इज फ्रिजिड जोन. इट इज़ बियॉन्ड आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्कल. ये रहा अंटार्कटिक और ये रहा इसके बियॉन्ड में यहाँ और यहाँ साउथ में हमें फ्रिजिड जोन देखने को मिलता है. एंड दिस जोन इज़ वेरी कोल्ड एंड रिसीव स्लैंटिंग रेज. यहाँ सन की रेज जो है स्लैंट यानी तिरछी पहुँचती हैं. ठीक है, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ UPSC, India lies mostly in the tropical zone, hence has generally tropical monsoon climate. अगर ये हमारा अर्थ है, ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारा ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो इंडिया जनरली present here. India generally present here and this is the tropical region. So India lies mostly in tropical zone and generally tropical monsoon climate. That is why the monsoon climate is seen here from the origination from the Indian Ocean. The fourth is meridians of the longitude. What is longitude? Longitude are also imaginary line running from North Pole to South Pole. Unlike latitude, they converge at poles and are not parallel to each other. ठीक है, let's we see. The longitude lines starting from North Pole and converge at South Pole means all the latitude lines are converge at North and South Poles. These lines are vertical lines and they are not parallel to each other. The distance of all the latitude lines are equal
but the distance of all latitude lines are not equal. Okay, what do we see here? Longitude measure the angular distance east or west of the prime meridian. Prime meridian means जो एंगुलर डिस्टेंस है वो ईस्ट और वेस्ट प्राइम मेरिडियन के देखने को मिलती हैं. ठीक है. प्राइम मेरिडियन इज अ 0 डिग्री मेरिडियन passes through Greenwich in England, divided Earth into east and west. Okay. Eastern hemisphere means 0 to 180 degree east and the western hemisphere is 0 to 180 degree west. This is the GMT line. Greenwich Meridian Time Zone means the prime meridian line 0 degree. From there to there 0 to 180 degree east and here 0 to 180 degree west lines. ठीक. From the perspective of UPSC, the prime meridian was adopted in 1884 at the International Meridian Conference held in Washington, D.C. The fifth is the grid system, means finding locations. The network of latitude and longitude form grid lines, means if this is a earth, these are the latitude lines and these are the longitude line. This is formation of grid. And that define the exact position of the place. Okay. Using the intersection of these lines, we can determine the exact position of any place on earth. मैंने आपको बताया. Example, Delhi is located at approximately 28 degree north latitude and 77 degree east latitude. Means the Delhi intersection point is 28 degree north and 77 degree east is the exact location of Delhi. From the point of UPSC perspective, the grid system forms the basis of geographical coordinate used in GPS system and mapping system. The sixth point is longitude and time. कैसे? The earth rotates 360 degree in 24 minutes. The rotation of earth, मैंने पहले चैप्टर में आपको बताया 360 डिग्री होता है. कितने देर में? 24 घंटे में. एक दिन में अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है. मीन्स इफ अर्थ रोटेट 24 आवर में 360 डिग्री यानी 60 मिनट में कितना हो जाएगा? 15 डिग्री. ठीक. यानी 1 डिग्री में 4 मिनट. ये भी आपको बता देंगे. 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट का डिफरेंस आता है. ठीक. कैसे? देखिए इधर. ई अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स मीन्स 15 डिग्री पर आवर. thus 1 degree longitude difference is 4 minutes. When we move east, time increases and when we move west, time decreases. कैसे? देखिए, जब हम 0 डिग्री से ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो टाइम जो है इंक्रीज करेगा, और जब हम 0 डिग्री से वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो टाइम जो है डिक्रीज करेगा. दैट इज़ फ्रॉम GMT. ठीक, फ्रॉम GMT. एग्जाम्पल में देखते हैं कैसे कैसे टाइम डिक्रीज और इंक्रीज करेगा. अगर 12 बज रहा है एट 0 डिग्री मेरिडियन यानी प्राइम मेरिडियन पे, तो जब हम 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जाएंगे तो जो टाइम है वो 1 घंटा अधिक हो जाएगा. 12 बजे से 1 बज जाएगा, PM का हो जाएगा. और वहीं अगर हम 15 डिग्री वेस्ट की तरफ आए तो टाइम 1 घंटा कम हो जाएगा. ठीक, कैसे? 1 घंटे में 15 डिग्री का डिफरेंस है. ठीक, यानी 15 डिग्री लैटिट्यूड में 1 घंटे का डिफरेंस है. ये हमने एग्जाम्पल से देख लिया. द 7th पॉइंट इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम
इंडिया ने खुद का एक अपना स्टैंडर्ड टाइम बनाया है, ठीक है। इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। ईस्ट लॉन्गिट्यूड मीन्स ये रहा लॉन्गिट्यूड लाइंस जो वेस्ट पे है और ये रहा लॉन्गिट्यूड जो ईस्ट पे है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इंडिया का लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड करता है। फ्रॉम दिस द डिफरेंस फ्रॉम द ईस्ट एंड वेस्ट इज 29 डिग्री। मीन्स इफ़ ईच डिग्री गिव्स 4 मिनट, अगर सारे डिग्री 4 मिनट का डिफरेंस देते हैं, इंडिया वुड हैव 2 आवर टाइम डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। यानी यहाँ से लेके यहाँ के बीच में अगर 1 डिग्री 4 मिनट का डिफरेंस देती है, यानी यहाँ से लेके यहाँ के बीच में जो टाइम गैप है वो 2 आवर का हो जाता है, ठीक है। टू अवॉइड कन्फ्यूज़न इंडिया यूज़ 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड नियर मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश एट इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन। यानी भारत अपना खुद का एक IST बना के रखा है, क्यों? ताकि कन्फ्यूज़न ना हो हमें कोई भी काम करने में, ठीक है। कन्फ्यूज़न ना हो, जैसे हमारा ट्रैवल टाइम या कोई भी ऐसी दिक्कतें ना हो, ऑफिस वर्क ड्यूटी टाइम, जिसकी वजह से हमें परेशानी हो, ठीक है। इसलिए इंडिया अपना खुद का एक टाइम मेरिडियन, स्टैंडर्ड मेरिडियन बना के रखा है। इंडिया का IST है क्या? द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST इज इक्वल टू GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम प्लस 5 आवर 30 मिनट। मीन्स ये GMT है, यहाँ से ये GMT है और ये हमारा इक्वेटर 0 डिग्री है। इंडिया इधर ही है, यानी GMT से 5 घंटे 30 मिनट की दूरी पर इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, ठीक। ये रहा, हमने आपको दिखा दिया ऊपर फिगर में, ठीक है। फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ UPSC नोट, IST इज नोटेड एट 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, this is asked in various examination. Reference for time zone: each country usually adopt a central meridian to maintain uniform standard time. Why do we need standard time? Because local time changes without longitude. Having one time for whole country simplifies administration, communication and travel. कहने का मतलब कि जब कोई एक ही टाइम जोन फॉलो हो किसी कंट्री में, तो उससे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कम्युनिकेशन है, ट्रैवल है, वो बहुत ही सिंप्लीफाइज होगा, ठीक है। हम आपको बताते हैं, जैसे रसिया एंड USA इज़ अ बिग कंट्रीज, सो दे यूज़ मल्टीपल टाइम जोन्स। आई थिंक रसिया यूज़ 11 टाइम जोन्स, 11 टाइम जोन्स। आई एम नॉट कन्फर्म बट लेट यू सी. Now we will discuss the gist of the chapter, means summary of the concepts. First, the latitude is a east-west lines measure north-south distance. Longitude is a north-south lines measure east-west distance. Equator is a 0 degree latitude, prime meridian 0 degree longitude. The torrid zone between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. IST meridian at 82.5 degree east. Earth rotation in 360 degree in 24 hour means 15 degree in 1 hour, means 4 minute gap in 1 degree. Okay, a figure is shown here. This is equator 0 degree. This is Capricorn 23.5 degree south. This is Antarctic Circle 60.5 degree south. This is Pole 90 degree south. Tropic of Cancer 23.5 degree north. Arctic Circle 60.5 degree north. This is 90 degree North Pole. In which from there to there is a torrid zone found, tropical zone found, torrid zone known as torrid zone. This is temperate zone. And the beyond Antarctic and Arctic is frigid zone found. Arctic is also divided into
two portion. The northern portion is known as tundra region, and the just below the tundra, taiga region is found. This is very important in environmental concept where the boreal zone is seen. Okay, so this is class 6th geography NCERT chapter 2. I think I will teach you very holistically. It will cover all the concept that is present in chapter 2, globe, latitude and longitude. So maintain the discipline and cover holistically. If you need the PDF of this chapter, you can contact me, you can comment me. I will send you on your WhatsApp. Thank you very much.